Hi everyone, how are you all? So, welcome to Cave Tales, a spiritual podcast series. So, today is episode number 5, and I have a very inspirational woman with me. So, ये मेरी mentor भी है, मेरी guide भी है, और मेरी favorite person है. So, आज हमारे साथ मिस मालविका मदान from चंडीगढ़ इस podcast में शामिल हुए हैं, and I'm so grateful, Malvika ma'am, for accepting my invitation. So, Malvika ma'am, welcome to this podcast. Gratitude, Kajal. Thank you so much for a wonderful introduction. But I don't even know if I deserve whatever you said. But so much gratitude for your kind words. Thank you. Thank you for accepting this invitation because I think you have lot of in your bucket, right? And people wants to know about all the spiritual things you are doing specially. So I am so grateful, first of all. So Malvika ma'am, kindly introduce yourself to our viewers so that they'll get to know about yourself. So I'm Malvika Madan. I have an experience of about 29 odd years in job plus business. I was a banker for 15 years, and it's been 14 years since I'm running my own business. I am a tarot card reader, I'm an astrologer, I'm a Vastu consultant, I'm a Reiki and Theta healer, I'm an Access Consciousness certified facilitator, and I'm a Joy of Business certified facilitator. I do private sessions, I do classes, I teach people different modalities. I do 17 odd modalities, and these are a few to name, which are my main gigs of business. And I'm in the process of expanding my businesses into different lines. And currently, I have 3 businesses already running successfully, and 4 more are in the pipeline. So I'm parallelly running 7 different businesses as of now. So, yes, that's pretty much a brief introduction about me. Wow. I mean, you are like a Wonder Woman right now in front of me. Okay, so Malvika ma'am, I hope that this is your first podcast experience. I hope so. So, how do you feel about this podcast journey or podcast experience जब आपने सुना कि podcast करना है with me? So, कैसा लगा? Thank you, Kajal, for asking that question because मैं क्लियरिंग्स बनाती हूँ, मैं क्लियरिंग्स के साथ I create change in my life and in the life of a lot of people who are associated with me. And मेरे काफी सारे clients हैं जो मेरे को बहुत महीनों से पीछे पड़े हुए हैं कि अपना podcast channel क्यों नहीं launch करते हो. Yeah. And see how you showed up in my world, because that was my ask or the ask of my clients or the ask of the universe. प्रभु की क्या कृपा है कि ऐसे रास्ता खुलना था. So yes, this is my first live podcast. And how does it get any better than this? And what else is possible that is showing up with podcasts in my world and Yeah. in yours, guys? एब्सोल्युटली अब हम वेट करेंगे आपके पॉडकास्ट की बिकॉज आई नो कि वो बहुत ही स्पेशल होने वाले हैं. So Malvika ma'am, you have mentioned that you were into the corporate field, right? So what inspires you to become a human empowerment life coach? So, we are excited to, know about your inspirational journey. So, I was a banker for 15 years, and banking karte hue job ke ups and downs. I was very successful in my job, but I was never happy. Right? So happiness depend करती थी, moments में आती थी happiness और चली जाती थी. तो कभी आज इंक्रीमेंट लग गई तो खुश है, लेकिन the guilt of being a mother to 2 young girls and not giving them enough time, family responsibilities को enough time ना दे पाना, कभी फैमिली की वजह से जॉब की स्ट्रगल्स को ना हैंडल कर पाना. I was always shuffling between both. And when my elder daughter turned 11, I had already set up my business parallelly with the job for 3 years. And once my business was profitable, that's when I decided to quit my job forever, never to go back to it again. And my elder daughter today is
almost 21. Hmm. So see the change. It's been like formally, I think about 10 years since, decades since I left my job, but I had already started my business parallelly with it. Right. Though it was not on a very large scale, it was very small, it was very different from what I'm doing today. Hmm. Because तब सिर्फ friends, family धीरे धीरे involved थे, and I was not charging anything. Yeah. Because आप job के साथ ऐसा risk नहीं ले सकते. You Right. cannot multiply play anywhere. वो Hmm. नहीं तो आपकी job पे भी stake आ जाता है. So I was doing everything free of charge for the first 3 years. But once the client base had expanded so much and people on their own started paying, and I was making profits out of it for the services I was providing, that's when I chose to call it quits. And जब से मैंने अपना business शुरू किया है, so, for me and my life, money was never a point of view for taking that decision. Hmm. It was more about ease, joy, glory with my body, with my relationships, with my family, Hmm. and with my kids, especially. जिसमें as a mother, मेरा guilt बहुत ज़्यादा आता था कि मैं अपने Hmm. बच्चों को एक फुल टाइम मॉम वाला टाइम कभी दे ही नहीं पाती हूँ. वो गिल्ट हैड प्लेड अ लॉट विद मी. मुझे लगता था फुल टाइम मॉम्स जो बच्चों के लिए करती है, आई फील देयर क्रेजीली. So Hmm. that was one reason I chose to give up my job, because my elder daughter was almost entering teenage, and I always wanted to be around her for her studies, for whatever she needed me for. Hmm. And since I've started my business, there has not been one day where I have been guilty, Hmm. not been one day where I have not had fun. मेरे Yeah. पास जॉब में भी I was earning really well, I was really successful, but I was not happy. Since I Right. started doing business, I really know what happiness is all about in my Abs- life. And most people don't say that in the business also. But Hmm. I can vouch for it. I am really happy with what I do for the last 14 years. I enjoy the journey immensely every moment of every day. Absolutely. I think happiness is more important than anything else. So, Malvika, Yeah. ma'am, when you initially started your journey in this spiritual field or in this life coach field, then, बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी reactions होते हैं, ये क्या कर रहे हो, ये कौन सी line है? Because people, they are not aware about this field, right? So, initially, Yes. कैसे reactions आपको मिले and, क्या response था आपकी family का, friends का, लोगों का आपकी इस journey के बारे में? थैंकफुली मेरे को इस मामले में ज़्यादा बैरियर्स नहीं मिले, ज़्यादा ब्लॉकेजेस नहीं मिले. माय फैमिली वाज प्रीटी सपोर्टिव, एंड द मोस्ट सपोर्टिव पर्सन हियर वाज माय हस्बैंड, जो एक्चुअली मुझे लगता था कि बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे. बट ही Hmm. वाज माय फर्स्ट क्लाइंट ऑफिशियली, Okay. जिन्होंने मेरे से हीलिंग कराई. माय फर्स्ट क्लाइंट व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग टैरो रीडिंग, my first client when I started doing astrology, my first client when I started doing family constellations. Okay. And he was such a big support system. And when your spouse is there with you to make, not cut your wings, and supports you to fly wherever you choose to fly, however wrong decisions you take or however right decisions you take, there is no point of view from the family. My mother-in-law was extremely supportive of what I was doing. Hmm. So that, I think, became ease, joy, glory for me. Yes, relatives had lots of points of views. Secure नौकरी छोड़ दी, इतना पैसा तो आ ही रहा था, फैमिली में रिस्क लेने की क्या जरूरत थी. Hmm. These all points of view सबके लिए आते हैं, तो मेरे लिए भी आए थे. But thankfully मेरी immediate family बहुत supportive थी, so I didn't have to struggle too much there. So I Yeah. had a lot of fun with creating whatever I was creating. That. रादर मेरे पास क्लासेस करने के, कोर्सेज करने के कई बार पैसे भी नहीं होते थे. And हाँ. I used to ask my husband to fund it for me, and he would joyfully do that for me. So that was a great support system. Yeah. Wow, absolutely good. So, you are doing so many modalities. So, tell us about these modalities in brief. So I do 17 odd modalities,
and out of which my main gig today is access consciousness, tarot, astrology, and vastu. These are the major things I do. Yes, I have clients from years and years for healings also, जिनको मैं आज भी मना नहीं करती हूँ, जिनके रेफरेंस से और लोग भी आ जाते हैं, बट बिकॉज आई हैव स्प्रेड माय feet in too many waters today, so I mean, I have to give the healings or the sessions, transfer it to somebody, but there are some clients जो कहते हैं कि करवाना है, so I don't say no to anything. But yes, majorly I'm contributing to 5 of these gigs. Yes, जैसे Akashic Records है, auto writing है, these are modalities I don't do very regularly, but client आया तो I don't say no either. And access consciousness is something that I started 3 years ago. और जब आप इस लाइन में या इस काम में आते हो, जैसे आप आए होगे काजल, तो एक पॉइंट पे हमें लगने लग जाता है मैं ये कर लूं, फिर मैं ये कर लूं, फिर मैं ये कर लूं, फिर मैं ये कर लूं, एंड वी कीप बेंचमार्किंग टू अ न्यूअर थिंग एवरी डे और एवरी मंथ, एवरी ईयर हमें कोई ना कोई एनर्जी पुल करने लग जाती है और हम वो करना चाहते हैं. विद ईच मॉडलिटी दैट आई डिड, मुझे लगता था इस काम में शायद मुझे मेरा लाइफ पर्पस मिल जाएगा. जो सारी चीजें मेरी लाइफ में बहुत कंट्रीब्यूटिंग रही हैं, बट एक्सेस कॉन्शियसनेस में आने के बाद मुझे एक्चुअली वो पर्पस जो मैं ढूंढ रही थी वो मिल गया. Right? So not demeaning any of the modalities that I do, because वो सारी जर्नी में से अगर मैं निकली नहीं होती तो आज मैं यहाँ तक नहीं पहुंचती. तो वो सारी मॉडलिटीज मेरी लाइफ में बहुत कंट्रीब्यूटिंग है और मैं किसी को भी पीछे छोड़ के नहीं चलती हूँ, सारी साथ लेके चलती हूँ. सो एस्ट्रोलॉजी, टैरो, वास्तु, family constellations, Akashic records, auto writing, healing modalities, everything is joy glory for me. So I choose to do that. And yes, my more and more time goes in access consciousness and tarot and astrology and vastu today. So they are my 4 major gigs as of now. Yeah. Okay, ma'am. So you are a Reiki healer and a Theta healer also, right? So what's the main difference between both of these modalities and how Theta can help people in their healing journey? So Reiki और Theta डिफरेंट मॉडलिटीज हैं, बट बहुत ज्यादा फर्क नहीं है दोनों में. मैंने हमेशा से थीटा केम टू मी when I was doing Reiki for about 7-8 years already. और उसके बाद से मैंने कभी भी क्लाइंट की हीलिंग की है तो आई हैव डन अ मिक्स ऑफ रेकी एंड थीटा हीलिंग. मैंने कभी स्टैंड अलोन रेकी नहीं की, स्टैंड अलोन थीटा हीलिंग नहीं की है. आई हैव ऑलवेज डन अ मिक्स ऑफ बोथ बिकॉज दे वर ईज जॉय ग्लोरी फॉर माय बॉडी, एंड दोनों ने मेरी क्लाइंट्स की लाइव्स में बेटर चेंज क्रिएट किया. राइट? तो रेकी हीलिंग में बॉडी टच करके हीलिंग करते हैं. थीटा हीलिंग में अबाउट 6 इंचेस अवे बॉडी की एनर्जी के साथ हीलिंग करते हैं. तो जो एथरिक बॉडी है उस पे भी हीलिंग हो जाती है और जो एक्चुअल हमारी बॉडी है उस पे भी हीलिंग हो जाती है. सो दैट इज अ लिटिल डिफरेंस दैट इज देयर इन बोथ, नॉट अ मेजर डिफरेंस. बोथ वर्क ऑन एनर्जी इटसेल्फ. So I hope I answered your question well. Yeah, absolutely. I just want to know that थीटा के क्या बेनिफिट्स हैं या कैसे थीटा इम्पैक्ट ला सकता है लोगों की लाइफ में एज अ हीलिंग मॉडलिटी. ओके, ग्रेट क्वेश्चन. सो थीटा हीलिंग से बेसिकली हमारी जो ऑरिक फील्ड है, राइट, और जो हमारा ऑरा है, ऑरिक फील्ड है, और हमारी जो एक एथरिक बॉडी क्रिएट हो जाती है हमारी रियल बॉडी के अराउंड, हम उसको भी हील कर पाते हैं थीटा के साथ. रेकी में हम सिर्फ अपनी इस बॉडी को, जो इस लाइफ में पैदा होने से डेथ होने तक जो हमारी लाइफ एग्जिस्ट करती है, बॉडी एग्जिस्ट करती है, हम सिर्फ उस पे हीलिंग कर पाते हैं. तो थीटा में मैं दूर से भी आपकी बॉडी पे हीलिंग कर लूंगी. मैं आपसे मतलब 15 फुट दूर खड़े होके भी आपकी हीलिंग कर सकती हूँ. तो वो डिस्टेंट हीलिंग में बहुत ज्यादा मेरे
क्लाइंट्स की लाइफ में चेंजेस आए, मेरी फैमिली फ्रेंड्स की लाइफ में चेंजेस आए, क्योंकि मैं डिस्टेंट हीलिंग में थीटा ज्यादा यूज करने लग गई थी। मैं रेकी थीटा का मिक्स यूज करती थी, बट ओके डिस्टेंट हीलिंग में थीटा बहुत ज्यादा फायदा देती है। ओके, दैट्स ग्रेट। सो मालविका मैम, आपने जब ये जर्नी स्टार्ट करते, कोई भी जब जर्नी स्टार्ट करता है, तो एक वो जर्नी में काफी स्ट्रगल्स भी आते हैं। हर हर दिन आपका अच्छा नहीं जाता है। समटाइम्स यू फील लो ऑल्सो, समटाइम्स कोई क्लाइंट ऐसा आ जाता है, समटाइम्स आपको लगता है कि यहाँ पे आज मतलब मेरा दिन सही नहीं गया, या ये जर्नी सही नहीं जा रही है, समटाइम्स डाउट्स आ जाते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसे होती हैं एज पर्सन टू पर्सन, राइट? सो आपकी लाइफ में ये जो जर्नी है, उसमें कुछ स्ट्रगल्स आपने फेस किए हो जो आपको लगे हो, एंड उन स्ट्रगल्स ने आपको कैसे हेल्प किया? फ्रैंकली स्पीकिंग काजल, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इसके रिगार्डिंग बहुत डिफरेंट है। मेरे हम्म, लिए कुछ भी स्ट्रगल नहीं था, मेरे लिए एवरीथिंग वाज अ लर्निंग पॉइंट। या ओके। और मैंने उसको कभी भी नेगेटिवली नहीं देखा, शायद इसीलिए उसने मेरी लाइफ में फास्टर चेंज क्रिएट किया और मेरे क्लाइंट्स की लाइफ में भी फास्टर चेंज क्रिएट किया, बिकॉज मैं उनकी एनर्जी से बहुत इजीली कनेक्ट कर पाती थी। और मुझे ये पता लग जाता था कि आउट ऑफ द 17 मोडालिटीज दैट आई एम डूइंग, कौन सी मोडालिटी इसको इनकी लाइफ में इस प्रॉब्लम को चेंज कर क्रिएट करने में बहुत ज्यादा सपोर्टिव होगी। हाँ, बिकॉज ऑफ बजटरी कंस्ट्रेंट्स कुछ लोग वो कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। तो मेरा कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होता था। आई यूज टू टेल द क्लाइंट, आई स्टिल डू, कि मेरे पास 5 वेज हैं आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के, आप पिक एंड चूज कर लो। ये इसकी ये कॉस्टिंग है, इसकी ये कॉस्टिंग है, इसकी ये कॉस्टिंग है, और ये इतने टाइम में चेंज क्रिएट कर देगा, इसमें इतने टाइम में चेंज क्रिएट कर देगा। चेंज सब में आ जाएगा, बट पॉइंट ऑफ व्यू क्लाइंट को गिव अप करना पड़ता है कि चूज उनको करना है, मैं उनके बिहाफ पे चूज नहीं कर सकती। तो शायद मैं कभी इस चीज में अटकी नहीं कि ये एक स्ट्रगलिंग पॉइंट है, तो मेरे लिए कभी पर से एक स्ट्रगल क्रिएट नहीं हुई, क्योंकि मैंने उसको हमेशा कुछ सीखने का पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है। तो मेरे लिए इसीलिए दैट्स व्हाई माय बिजनेस हैज बीन वेरी मच फन फॉर मी। आई हैव या नॉट गॉन इनटू द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ स्ट्रगल्स और डिस्ट्रक्शन और प्रॉब्लम्स। आई हैव ऑलवेज चोजन कि हम इसके बियॉन्ड क्या क्रिएट कर सकते हैं। तो वो चीज ने आई थिंक मुझे स्ट्रगल्स में कभी फंसने नहीं दिया। तो प्रोबेबली स्ट्रगल इज नॉट अ थिंग आई हैव एक्सपीरियंस बैडली, बिकॉज इट वाज नेवर माय चॉइस। I don't choose struggles even today, so I don't receive them, as simple as that. Yeah, that's a great point of view, I must say. So, आप Thank you. बहुत सारी मोडालिटीज करते हो, तो कौन सी Hmm. ऐसी मोडालिटीज हैं जिन्होंने आपकी लाइफ में बहुत ही ह्यूज इम्पैक्ट वो लेके आई हैं, एक बहुत अच्छा चेंज क्रिएट किया है आपकी लाइफ में? सो कुछ ऐसी Okay. मोडालिटी जो आपकी लाइफ में। So, हर मोडालिटी ने मेरी लाइफ में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट डेफिनेटली किया है। हम्म, लोड्स एंड लोड्स भी कंट्रीब्यूट किया है, बट जैसे मैंने पहले बोला, मुझे एक छत के नीचे 2000 चीजें डील करने का पर्पस एक मॉडलिटी में नहीं मिलता था। फिर हम्म, मेरी एक नई सर्च शुरू हो जाती थी कि मेरी फैमिली का ये चेंज क्रिएट नहीं कर पाई मैं इस मॉडलिटी से, या इस क्लाइंट का ये चीज 90 चीजें सॉल्व हो गई, जो 10% रह गया, मुझे लगता था मुझे कुछ और सीखना चाहिए, मुझे कुछ और बेटर करना चाहिए, और बेटर करना चाहिए। वो राइट। जो सर्च है मेरी, वो एक्सेस कॉन्शियसनेस में आने के बाद खत्म हो गई है। राइट, ओके। मेरे पास 8000 से ज्यादा टूल्स हैं एक्सेस कॉन्शियसनेस में, जिसमें हम हर चीज के सोल्यूशन के लिए हमें सोचना नहीं पड़ता, और हर इंसान जो एक फैसिलिटेटर है वो चेंज क्लाइंट की बॉडी की एनर्जी को समझते हुए खुद इमीडिएटली क्रिएट कर लेता है। तो उसके लिए वो जर्नी बहुत इम्पोर्टेंट थी, और वो चेंज बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड गिविंग अप, सेकेंड थिंग जो बहुत इम्पोर्टेंट रही है, जहां हम ये सोच लेते हैं कि अब हमें सब कुछ आ गया, या हम परफेक्ट हो गए हैं, या हम भगवान बन गए हैं, वहां पे हमारी लर्निंग अनलर्निंग में कन्वर्ट हो जाती है, राइट। और वहां पे हम सीखना बंद कर देते हैं। तो सीखना तो जब तक जिंदा है तब तक बंद नहीं होगा।
तो Right. मैं नॉलेज एनहांस करने में बहुत बिलीव करती हूँ, और उसने मेरी लाइफ में बहुत चेंज क्रिएट किया है। मुझे किताबें पढ़ना, मुझे अपनी ग्रोथ पे काम करना, मुझे सीखना आज भी बहुत Right. पसंद है। तो आई मेक इट अ पॉइंट दैट आई लर्न समथिंग न्यू, I hear to new podcasts from different people I look up to every day. Hmm. I learn every day. मैं कोई पॉडकास्ट सुन लूंगी, मैं कोई यूट्यूब कॉल सुन लूंगी, मैं कोई हमारे ग्रुप की कॉल सुन लूंगी, मैं अपनी कॉल्स पुरानी सुन लूंगी, जिसमें मुझे लगता है कि मैंने क्या चेंज आज इस एनर्जी से मैं क्रिएट कर सकती हूँ। मैं अपने मैनुअल्स दोबारा पढ़ लेती हूँ, मैं बहुत सारी किताबें पढ़ती हूँ, पीछे दिख रही होंगी मेरी बुक्स। सो Right. I make it a point to read at least 2 new books every month. So I Yeah. keep adding to my library and my learning, because जब तक नॉलेज एनहांस नहीं होगी, हम सीखने में बिलीव करेंगे नहीं और आगे बढ़ने में, तब तक चेंज नहीं क्रिएट होएगा गाइस। Right. एंड life is a never ending learning journey, and I Hmm. love to learn, so that it's new for me to give to the world more and more and more. Absolutely. So, you have received an award from, Madhuri Dixit also, from Ravina Tandon also. So, वो कैसा experience था? इतनी recognition मिलती है जब, तो कैसा लगता है? um Well, that was I don't know, a long time ago, but yes, it was beautiful. And you were part of this journey when I received those awards. Yes. So yes, you were such a big contribution to me at that point of time. Yes. And वो awards ऐसे थे, वो एक moment of truth था मेरे लिए। Hmm. बट उन अवार्ड्स ने मेरी लाइफ में कंट्रीब्यूट किया डेफिनेटली। उन अवार्ड्स ने चेंज क्रिएट किया डेफिनेटली। क्लाइंट बेस बढ़ता चला गया, लोगों का ट्रस्ट बढ़ता चला गया, बिकॉज Hmm. जब आपको आपके काम के लिए रिकग्निशन मिलती है, अक्नॉलेज किया जाता है, तो Hmm. आपकी विजिबिलिटी भी बढ़ती चली जाती है। एंड Right. yes, that's how those awards have contributed to me, and each year the different awards that show up, the different recognitions that show up, they add value to my world. So I receive them with kindness. I am happy when people choose to Yeah. recognize my work and gift me with the beautiful awards they gift me with. So I Right. am open to receiving, guys. Keep gifting. I am happy to receive them. Thank you. Wow. तो आपका मैंने Yes, मूवी देखा था दैट वास्तु के साथ कोलैबोरेशन आपने शायद किया है आर्किटेक्चरल फॉर्म्स के साथ yes, एंड yes. बहुत ही ब्यूटीफुल हाउसेस जो है वो क्रिएट किए हैं सो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा है आपका वास्तु का Uh, So, I have been a Vastu consultant for quite some years, but I was doing work standalone या referral से जितना भी आ जाता था. So, in the last 4 months, I have tied up with an architect and interior design company called Benediction Design, where we both have become partners. I'm the Vastu consultant, he is the architect and the interior designer. And we take up projects for builders, for individual homes, for renovation of homes, and creating change with the new line interiors and Indian choice of taking it ahead with vastu ki vastu ke hisab se ghar acha hona chahiye. So yeah, that is one more line of business that I have added to recently. And I've been doing vastu for quite a few years. My partner has been doing interior designing and architecture for lot many years. So that's how we've collaborated and started a new company to do that. Yes. वाओ दैट इज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस सो गाइस Yes. मालविका मैम जो है वो हमारे साथ बने हुए हैं सो दिस इज ऑल अबाउट पार्ट 1 ऑफ पॉडकास्ट सीरीज केव टेल्स सो ये टेलीकास्ट हो रहा है आज फ्राइडे को सो सैटरडे को भी मालविका मैम हमारे साथ रहेंगे एंड हम बहुत सारी और बातें जानेंगे उनसे डिफरेंट मोडालिटीज के बारे में एक्सेस कॉन्शियसनेस के बारे में सो आपने ये एपिसोड पूरा देखना है एंड इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट देन यू कैन काइंडली कमेंट अस ऑन द comment section of the YouTube video. And guys, मिलते हैं हम कल आपसे same time 7:30 p.m. And Malvika ma'am, thank you so much for joining today's episode. And Thank you. I Thank you, Kajal. Just one more thing before we leave, I would like to say.
Guys, please ask more and more questions because questions create change in the world. तो आप सवाल पूछोगे, मैं उनके जवाब दूंगी, तो better change हम create कर पाएंगे, communication better होगी. So yes, please comment to ask more and more questions of whatever you desire to ask. Yeah, and Thank you, Kajal. Thank you. kindly tell them about your Insta handle and your business name so that they can contact you. Meanwhile, हम जो इनका link है वो description में तो डालेंगे ही, but आप भी अपने viewers को बता दे so that they can contact you for different services. Yes. So Malvika Madan is the brand. So the brand name is Malvika Madan, and my Instagram handle is Madan Malvika. My Facebook ID is Malvika Madan. My LinkedIn description, you can reach me on LinkedIn also, which Kajal will put the link in the description box. Yeah. And you can reach me on my contact number of all the details that Kajal will take up. So yes. Yes, guys. So सारी details description में है. Please go and follow her. And if you feel that you need any kind of help, then you can contact her. So I know आपको result बहुत अच्छा मिलने वाला है जब आप उनको contact करने वाले हो. So guys, stay tuned for next part because मालविका मैम के साथ अभी हमने बातें करनी है, बहुत सारी knowledge and experience को gain करना है. So stay tuned for part B, episode 5. Till then, take care. Bye bye. See you guys. Bye.